Yes, today we will do next dual space. The statement is the dual space of, next example, the dual space of C, देखो C raised to power n और इसके साथ नॉर्म है infinity, right? Is the space, all are non-linear spaces, जो सेट है वो इट विल रिमेन सेम, दैट इज सी रेज टू, देखो सी रेज टू पावर एन इन इटसेल्फ एक सेट है बेटा, ठीक है? वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है। पहली बात ये सेट है, सेट के बाद इसने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की तो ये वेक्टर स्पेस बन गया, फिर इसने नॉर्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, देन इट बिकम्स अ नॉन लीनियर स्पेस एंड इट इज दिस। सो जस्ट सी, स्पेस सेट सेम रहा लेकिन नॉर्म बदल गया स्पेस में, दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। Cn, this is the space, right? With respect to infinity, its dual is equal to Cn with respect to this norm. बस norm change हुआ आपका दोनों में, लेकिन वेक्टर जो है जो सेट है that will remain same. So first of all, we always start from the natural basis. So C raised to power n के natural basis से शुरू करेंगे. Consider the natural basis. E1, E2, so on up to En for C raised to power n. Then every continuous linear functional, then every continuous linear functional f on C raised to power n, f on C raised to power n can be uniquely expressible in the form हमने एक नेचुरल बेसिस लिया, ठीक है? Then we have taken the functional on C raised to power n, then the vector f of x can be uniquely, it's not vector, but it's a scalar. Then f of any functional f can be uniquely expressible in the form f of x summation I running from 1 to n, alpha I f of ei, right? For all x is equal to x1, x2, so on up to xn. तो क्लियरली अब देखो, जब आप एक फंक्शनल डिफाइन करेंगे बेटा किसके ऊपर, फंक्शनल ऑन Cn, एक f डिफाइन किसके ऊपर हुआ, Cn के ऊपर, कहा जा रहा है फील्ड ऑफ स्केलर्स में. So when you will take the vector x here, right, then it will be what you will get, that will be f of x, right? अब देखो यहाँ पे आपने एक फंक्शनल डिफाइन किया, यू हैव टेकन x और x के वेक्टर्स आपके पास क्या है, x1, x2, so on up to xn. कितने हैं, n डायमेंशन है, फाइनाइट डायमेंशन है, सो वी हैव टेकन x1, x2, xn. अब इसमें कितने बनेंगे, ये जब आप इसको ओपन करोगे तो ये भी तो बेटा n वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है? तो ये जो n वेक्टर्स हैं ये डेफिनेटली किसमें होंगे, C raised to power n में. देखो बेटा R raised to power n या C raised to power n में आने के लिए सिर्फ कंडीशन यही है कि एक तो वेक्टर्स जो है वो जो आपके पास ये इसमें जो भी आप n टुपल्स ले रहे हैं इसका नंबर फाइनाइट होना चाहिए, और अगर ये R raised to power n में से आ रहा है तो सिंगल सिंगल ये R में से आ रहा है. इफ दे आर कमिंग फ्रॉम C raised to power n, इसका मतलब ये सिंगल सिंगल C में से आ रहा है. No any other condition they have to satisfy. So after the unique representation, then we can say that f of E1, f of E2, soon up to f of En. जिस तरह से x एक वेक्टर था जिसका नाम x1, x2, xn हमने रखा था, that belongs to C raised to power n या alpha. x अगर alpha लिया है, you can take alpha here, right? So f of E1, E2, En. So let its name be U, and this
set definitely belongs to c raised to power n clearly, right? Now define the map. Define the map. ये क्यों हमने निकाला? Why we have taken? क्योंकि आपने एक मैप बनाना है. कहां से कहां? t एक मैप लिया from c raised to power n. कहां से? This norm of infinity से c raised to power n कहां तक जाएगा? यहाँ पे स्टार आएगा ना, from star. So you will define a map. Every time you are defining a map this to cn norm of 1. इस तरह से आपने एक norm define करना. To define a map T from cn this infinity star to c raised to power n with respect to the norm 1, right? As तो व्हाट वेक्टर यू विल टेक, ये फंक्शनल है बेटा, जिसके ऊपर स्टार लग गया मतलब वो एक ड्यूल स्पेस है. तो यहां से एक्स वेक्टर नहीं आएगा, यहां से क्या आएगा? एफ आएगा. इसकी इमेज यहाँ पे क्या बनेगी? टी ऑफ एफ. अब इसके एलिमेंट्स आप क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ई. आप इसके एलिमेंट्स लिखेंगे एफ ऑफ E1 E2 सोन अप टू एफ ऑफ En. इस तरह से आप इसके एलिमेंट्स को जनरेट करेंगे. एंड वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू c raised to power n. So T of F is equal to, so हमने इसका नाम रखा हुआ है U. This is equal to F of E1, F of E2, so on up to F of En. Right? Now, so the next question is, next part is क्या क्या prove करना है? What we want to prove? Number 1, T is linear. To prove T is linear. Number 1, right? Then number 2, T is 1 1 and on 2. T is 1 1 and on 2. And third, T is isometry. So as far as the linearity and the 1 1 on 2 is concerned, it will be done by you. That is quite easy. So I am doing T is isometry, right? So isometry, third part I am doing T is an isometry. What does it mean? It means to prove norm of TF is equal to norm of F. This I want to prove. So first isme what we will prove? Norm of TF is greater than or equal to norm of F, and norm of T of F is less than or equal to norm of F. So one by one we will prove these inequalities. Now as F is bounded, F क्या है? बाउंडेड है. क्यों बाउंडेड है? क्योंकि F एक फंक्शनल है. बिकॉज F इज अ फंक्शनल ऑन c raised to power n, राइट? तो जो आपके पास F हमने डिफाइन किया था शुरू में, हम उसका क्या ले लेंगे? मॉड. So that is summation I running from 1 to n alpha I f of ei its mod. So this is less than or equal to mod जब बनता जाएगा. This is summation I running from 1 to n alpha I f of ei its mod, right? तो यहाँ पे अब आपने इनइक्वालिटी जो है क्या करना है? आप बेटा बड़े ध्यान से देखना है. This is equal to summation I running from 1 to n alpha I f of ei, right? अब ये जो f of ei है, ये किस में है? ये इसमें है बेटा. Is it clear? ये इसमें है, right? ये अल्फा i किस में है? यानी x. आपके पास कौन है? x है, इसके ये वेक्टर्स हैं. ये किस में है? ये c raised to power n norm of infinity, राइट? तो उस हिसाब से हम इनइक्वालिटी लगाएंगे जब दोनों को सेपरेट करेंगे. सो जब इसको बेटा मैं सेपरेट करूंगी तो व्हाट इट विल बी, यहाँ पे मैं इसका नॉर्म अप्लाई कर दूंगी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल टू. आप जस्ट इमेजिन कि व्हेन यू विल हैव द समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi yi इस तरह से होता था, तो आप कैसे उसको इनइक्वालिटी में बदलते थे? इस तरह से. यानी अब एक
एक वेक्टर के ऊपर उसका नॉर्म लग गया, दूसरे वेक्टर के ऊपर उसका नॉर्म लग गया, सेम हियर। अब एक वेक्टर आपके पास ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है, तो दोनों के ऊपर उन दोनों नॉर्म, दोनों का अलग अलग नॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ। सो व्हाट यू विल गेट, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है नॉर्म इन्फिनिटी में हाउ द नॉर्म इज डिफाइंड, हाउ द नॉर्म ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज सुप्रीमम alpha I mod 1 less than or equal to I less than or equal to n. Here the norm is defined 1 less than or equal to I less than or equal to n, and here you will write mod of alpha into. अब यहाँ पे नॉर्म कैसे डिफाइन होगा किसी वेक्टर का, यू नो दिस इज समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n f of ei mod, अब रेज टू पावर कितना है, p का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1 whole raised to power 1 by 1. So it will be summation I running from 1 to n f of ei. सिर्फ ये आपको देखो वन पावर लगाने से देयर विल बी नो चेंज, सिर्फ आपको बताने के लिए भी हमने यहाँ पे नॉर्म 1 का नॉर्म अप्लाई किया है, दिस नॉर्म हैज बीन अप्लाइड हियर, और यहाँ पे कौन सा अप्लाई हुआ है, सुप्रीमम वाला, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज इट, what is supremum of alpha? This is norm of x infinity. And this is what? This is norm of u1. Or you can say it is norm of tf. दोनों तरफ से कह सकते हैं आप. So कहाँ से शुरू किया था हमने? f of x से. So f of x mod is less than or equal to, what is u? What is u here? Norm of tf. So this is norm of tf. You can write here norm of x infinity and norm of tf. Right? Here is 1. Norm of tf. Here is 1. 2 times I have written. And here is norm of x. So therefore, it implies mod of f of x is less than or equal to norm of tf into norm of x. Let's take the supremum. On taking supremum on both sides with respect to the norm x infinity less than or equal to 1. So supremum norm of x infinity less than or equal to 1. Here is f of x mod. This is less than or equal to. Norm of tf is independent of x. So supremum सिर्फ आपका कहाँ पे apply होगा, इस जगह पे. This is in the curly bracket. Norm of x infinity less than or equal. So what you will get? This is norm of f is less than or equal to norm of tf into 1. So it implies norm of f is less than or equal to norm of tf. Here you will write subscript as a 1, right? So this is the first part has been done. ठीक है जी, फर्स्ट इनइक्वालिटी डन. अब हम इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे. Now we will prove that. Second part, prove norm of f is greater than or equal to norm of tf. 1. So choose an element just like the another one जो हमने पीछे किए हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा. Choose an element x is equal to x naught. क्या लेंगे? Lambda 1, lambda 2, so on up to lambda n. Definitely it belongs to series. Where what is lambda I? What is every lambda I? Lambda is equal to f of ei conjugate upon f of ei. It's mod, right? When we will apply it when it is not equal to 0 and 0 elsewhere. So this lambda has been chosen, right? Now, what is x naught? What is x naught? X naught क्या choose किया आपने बेटा? Lambda 1, lambda 2, so on up to lambda n. This belongs to Cn. So when I will take its supremum, so what it is, it be supremum of 1 less than or equal to I less than or equal to n, right? And here is what? Lambda I, its mod. So let us put the value here.
What is lambda I? Lambda I is f of ei. It's already a mod, right? Conjugate upon f of ei, right? यही वैल्यू पुट करेंगे. सो बेटा देखो, z कॉन्जुगेट एंड z कॉन्जुगेट का मॉड ले लूं या मैं z का मैं मॉड ले लूं. z कॉन्जुगेट मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ z. ठीक है जी, ये हमेशा होल्ड करेगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है. z कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा बी. दोनों का मॉड निकालो, क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल. ठीक है, इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ऑल? सुप्रीमम कितना आएगा? 1. यानी मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 आई, बाकी क्या होंगे उससे छोटे. सो व्हाट यू विल राइट हियर? दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1. इट इंप्लाइज इज लेस देन और इक्वल टू. ठीक है जी, इसको स्टार्ट दे दीजिए, आगे हमारा ये यूज होगा. अब अगला है f of x नॉट. व्हाट इज f of x नॉट? f of x naught is equal to, what is it? This is summation. This is summation I running from 1 to n, right? Here is lambda I, here is f of ei, right? So let's put the value here. Summation I running from 1 to n. What is lambda I? This is f of ei. It's conjugate upon f of ei. It's mod into f of ei, right? So this is summation I running from 1 to n. But a z into z conjugate. Z into z conjugate is. What is z into z conjugate? This is mod of z के. ये z conjugate का काम कर रहा है, ये z का. तो z into z conjugate is mod of z square. ये लगा दिया मैंने. ठीक है जी, नीचे ये पड़ी है एक वैल्यू, ये आपस में कैंसल. सो यू आर लेफ्ट विद समेशन I running from 1 to n f of ei its mod, right? And what is it? So f of x naught is summation I running from 1 to n. ये आपने नॉर्म निकाल दिया बेटा किसी का. Anyone tell me ये किसका नॉर्म है? ये u का नॉर्म है बेटा. u क्या था? What was u? Norm f of e1, f of e2, so on up to f of en. तो बेटा ये उसका क्या है? नॉर्म है. तो नॉर्म ऑफ u1, या हम tf का नॉर्म भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि u और tf की जो वैल्यू है वो सेम है. चलिए, सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया. तो हमने दो वैल्यूज निकाल ली बेटा. तो वन इज इट इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x इंफिनिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड f of x naught is equal to norm of u, right? Now what is norm of f? Norm of f is equal to supremum f of x naught mod with respect to norm of x infinity less than or equal to 1, right? हमने इसीलिए पहले प्रूव कर दिया कि जो x नॉट वेक्टर की लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू 1. अब हमने उसका सुप्रीमम ले लिया. अब बेटा यहाँ पे मैंने कौन सा, देखो आपको पता है 3 तरह की डेफिनेशंस होती हैं. तो मैंने कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे यूज करनी है? ये वाली. ठीक है, we are using this definition and this x naught is coming from c raised to power n. अब फिर वही बात, this norm of f is greater than or equal to one particular member of the set. Is it clear? ठीक है, right? And what is the value of f of x naught? This is norm of u1. This is norm of u1. ठीक है, एक तो मैंने ये लगा दिया एग्जैक्टली. अब रह गया नीचे डिनोमिनेटर में. यहां से देखो, अब जब आप इसका डिनोमिनेटर लेंगे 1 by x naught, जस्ट वेट, 1 by x naught infinity, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो इसका मतलब व्हेन यू विल पुट हियर 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल. बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. बिकॉज नॉर्म ऑफ x infinity is less than or equal to 1, it implies 1 by x naught infinity is greater than or equal to
1, राइट. सो आप इनको अब इकट्ठा कर लीजिए. It implies norm of f is greater than or equal to norm of u1. And what is norm of u1? This is norm of tf1. So it T. implies norm of f is greater than or equal to norm of tf1, right? So by combining all the values, it implies norm of f is equal to, you will write norm of tf is equal to norm of f by 1 and 2. It implies T is an isometric. So T is an isometric isomorphism. ठीक है. लास्ट में आपने क्या लिखना है? Therefore the spaces. Therefore T is an isometric isomorphism of कहां से कहां? इस स्पेस से किस स्पेस तक? इस स्पेस तक. ठीक है जी. सो द स्पेसेस आर, फिर अगली लाइन कैसे? ये बेटा ये इसको कंपाइल कर रहे हैं हम. एंड देयरफॉर द स्पेसेस c raised to power n and this and c raised to power n this, राइट. स्टार लगाएंगे. आर आइसोमेट्रिक morphic नहीं, morphic, right? It implies Cn its star is equal to this. Implies dual of this space. You will write the word space. Is this. देखो बेटा, दो चीजों में जब आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो स्टार लग गया. जब आपने लिखना है ड्यूल ऑफ, फिर नहीं यहां स्टार लगेगा. इसको बोलने में ही क्या आएगा? ये पूरा ड्यूल ऑफ. जब आपने एक्सप्रेशन दिया ये, तो यहाँ पे स्टार आ गया. जब लिखा तो यहाँ पे स्टार नहीं लगा, राइट. So I hope the point is clear to all of you.